Hello everyone, welcome to my channel. This video is about the chairs by Eugene Ionesco, and here I will discuss Eugene Ionesco as an absurdist playwright. Okay, so this topic is prescribed in the syllabus of BBMQ semester 1. So please like, share and subscribe my channel to get the notification. Now here we will discuss Eugene Ionesco as a playwright or discuss Eugene Ionesco as an absurdist playwright. So अगर ये में इस दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है और यूजीन आइनेस्को को एज अ प्लेराइट की तरह डिस्क्राइब करना है, देन यू हैव टू राइट द सेम आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. ओके, एज अ प्लेराइट. ओके, सो यूजीन आइनेस्को जो थे, ही वॉज द रोमानियन फ्रेंच प्ले राइट. ठीक है, एंड ही रोट मोस्टली इन फ्रेंच एंड ही वॉज द foremost figure in the French avant-garde theatre in the 20th century. Then his first play is The Bald Soprano, and it is his anti-play which contributed to the beginnings of what is known as the theatre of absurd. This टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट. थिएटर ऑफ एब्सर्ड. थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो इसमें नंबर ऑफ प्लेज इंक्लूड करता है और आइडियाज़ को फॉलो करता है, अल्बर्ट कामू के आइडियाज़ को. और उस अल्बर्ट कामू इज़ अ फिलोसफर एंड एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म. ओके, देन ही वॉज, एब्सर्डिज्म का मतलब होता है बेतुका चीज़. ओके, मीनिंगलेस. ही वॉज awarded the Austrian State Prize for European Literature in 1970 and the Jerusalem Prize in 1973. Then as a child he moved to Paris with his Romanian parents. Why? So that his father could study for a doctorate degree in law. And then what happened? Then Romania entered war with Germany. वहाँ पे war छिड़ जाती है जर्मनी के साथ. Then Austria and Hungary. Okay, so his father was called back. Why? For the military services, because his father is required. Then Eugene and his family remained in Paris until Eugene was a young man. Okay, then he returned to Romania, okay, in 1928 and to study in Bucharest. Okay, then there he meet his future wife. उस wife का नाम था Rodica Burilenio. Okay, then they married and then Eugene complete after. Okay, so ये दोनों का married हो जाता है. Then after Eugene completed his studies he began teaching French. Okay, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्टेड टीचिंग एंड इन फ्रेंच एंड वाइल राइटिंग पोएट्री ऑल्सो, नॉवेल्स एंड लिटरेरी क्रिटिक्स. देन ही रिटर्न टू पेरिस टू कंप्लीट हिज डॉक्टरेट, ओके, ऑन मॉडर्न पोएट्री एंड बिकम अ फ्रेंच सिटीजन इन 1950. दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट ही बिकेम अ फ्रेंच सिटीजन इन 1950. यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस. देन Eugene did not write his first play until 1948. 1948 तक उन्होंने अपने फर्स्ट प्ले को नहीं लिखा था. एंड व्हाट हैपन दैट ही हैविंग डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, दैट मीन्स उनको इंग्लिश सीखना था. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश सीखेंगे. एंड ही वॉज स्ट्रक बाय द इम्पिटेंस ऑफ द क्लीचेस ऑफ डेली कन्वर्सेशन दैट अपीयर्ड इन हिज फ्रेज बुक, एंड आउट ऑफ सच नॉनसेंसिकल सेंटेंसेस ही कंस्ट्रक्टेड हिज फर्स्ट प्ले. सो उनका फर्स्ट प्ले था द बाल्ड सोप्रानो 1948, जो कि एक सैटराइज करता है मिडिल क्लास के फैमिली के कंस्ट्रक्शन को, जो कि एक ट्रैप्ड है एक ऐसे वर्ल्ड में दैट इज़ डिफाइंड बाय मीनिंगलेस फॉर्मेलिटीज़, जहाँ की वो मीनिंगलेस फॉर्मेलिटीज़ तो उसको डिफाइन करते हैं स्टील रूटीन्स. स्टील रूटीन मतलब घिसे पिटे रूटीन्स के साथ. ओके, और बासी स्टेल, दैट मीन्स तो वहाँ पे मीनिंगलेस चीज़ हो रही हैं, स्टेल चीज़ फॉलो हो रही हैं, स्टेल रूटीन्स को फॉलो वो कर रहे हैं. So what happened when this work got published? Then this work got success. Okay, so he was greatly surprised by the success of the play. Okay, Ionesco embarked on a career as a writer of what he called anti-plays. So वहाँ से जो था Ionesco का कैरियर एज अ राइटर वहाँ से शुरू हुआ. ओके, एज अ राइटर ऑफ व्हाट ही कॉल्ड एंटी प्लेज. इन्होंने इसको एंटी प्लेज कहा, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली कंबाइन करता है एक ड्रीम और अ नाइट मेयर. ठीक है,
एटमोसफेयर ओके विथ ग्रॉटेस्क्यू, ग्रॉटेस्क्यू को मतलब होता है बेतुका, भद्दा, बिजर का भी मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल दैट मीन्स विचित्र टाइप का, एंड विम्सिकल ह्यूमर का मतलब होता है अनयूजुअल नॉट वेरी सीरियस, सो अनयूजुअल थिंग जो कि ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी प्लेस. Now Ionesco most famous works includes, that means Ionesco का ये सब most famous work है Rhinoceros 1959, The Bald Soprano 1950, The Chairs 1952, The Lesson 1951, Amidi or How to Get Rid of It 1954. देन उसके बाद है एग्जिट द किंग 1962, द किलर 1958, हंगर एंड द ट्रस्ट 1964, देन स्ट्रॉल इन द एयर 1962. So after a stroll in the air, the new tenant 1955 and Macbeth 1972. Then Rhinoceros is a play about totalitarianism and it remains one of the most popular work, and he was one of the founders of a style of drama called theater of absurd. Okay, so what happens in Chairs, there is an elderly couple, वहाँ पे 90s के couple होते हैं, and they wait for the arrival of an audience. वहाँ पे वो audience के arrival का wait कर रहे होते हैं टू हियर द ओल्ड मैन, वहाँ का जो एक ओल्ड मैन जो होता है उसके लास्ट मैसेज को सुनने के लिए. बट वहाँ पे कुछ वैसे लोग नहीं रहते, कोई ऑडियंस नहीं रहता. देयर वॉज ओनली एम्प्टी चेयर्स ओके ऑन अ स्टेज, और दे हायर्ड एन ऑरेटर ऑल्सो दैट विल कन्वे द मैसेज ऑफ ओल्ड मैन टू ऑडियंस, बट देयर नथिंग हैपन लाइक दैट. एंड जब वो क्या करते हैं, जब ऑरेटर वो बोल देता है वो मैसेज को, देन फीलिंग वो ऐसा फील करते हैं कॉन्फिडेंट दैट उनके मैसेज जो हैं वो डिलीवर्ड हो गए हैं ऑडियंस तक. एंड देन ही कमिटेड, द वाइफ द कपल ओके कमिटेड अ सुसाइड. देन ऑरेटर टर्न्स आउट टू बी एफ्लिक्टेड विद एपेसिया. फिर बाद में पता चलता है कि ऑरेटर जो था उसको वो पीड़ित था, किससे, एफ्लिक्टेड था विद एपेसिया, एंड हाउएवर कैन स्पीक ओनली गिब्रिश. वो एक अर्थहीन भाषा बोल के वो चल गया, बड़बड़ बड़बड़, दैट मीन्स गिब्रिश का मतलब बड़बड़ाना भी होता है, और अर्थहीन टाइप का बोलना. ओके, गिब्रिश का मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, मीनिंगलेस स्पीच. ओके, ही स्पीक मीनिंगलेस स्पीच. Okay, so now in the lesson this is about a timid professor who uses, timid का मतलब होता है शर्मीला, okay, who uses the meaning he assigned to words to establish tyrannical dominance over an eager female people. So his works are visceral, okay, visceral that means not intellectual, hilarious, okay, funny, okay, dark, strange and funny, with a cutting view of the insanity of capitalism, fascism, government, society and people. So इनके वर्क्स में ये सब देखने को मिलता है. Now in 1962, Martin Esslin identified Ionesco as a leading writer in the theater of the absurd. So Martin Esslin जो थे वो Ionesco को एक leading writer in the theater of absurd आइडेंटिफाई किए. नाउ इसमें theater of absurd में अदर राइटर्स भी हैं, जैसे इंक्लूड हो गए सैमुअल बेकेट, जीन जेनेट, आर्थर एडम्बोव, ओके, then and they shared similar concerns about life meanings, or rather its meaningless and its mystery. इनका अगर देखोगे तो वर्क में सब सिमिलर कंसर्न रहेगा अबाउट लाइफ्स मीनिंग्स को लेकर के, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट टू एक्सप्लोर एंड to express and explore the problems of living in seeming meaningless, okay, and this writer not only challenged the traditional theoretical models but revolutionized the art of writing itself. So Eugene Ionesco later died in 1994 and was buried in the Montparnasse Cemetery in Paris, and thus Eugene Ionesco was a great absurdist playwright and his works made a remarkable contribution in the field of English literature. Thank you so much. Okay, ये आपका क्लास था यूजीन आयनेस्को के बारे में. एंड इफ़ यू अगर आपको इस टाइप की वीडियोस के और डिटेल्स चाहिए, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन.